Welcome back. Let's now turn our focus to battleground Northeast as we build up to the counting day tomorrow. Remember, BJP chief ministers are currently leading governments in 4 of the 7 contiguous states of the Northeast, a tally that it aspires to increase at least by 1 after the elections in these 3 states, the results of which are due to be declared tomorrow. So for the Congress party, it's been a downward spiral despite emerging as the single largest party in Meghalaya in 2018. BJP and the regional party, Conrad Sangma's NPEP, joined hands to form government with a mass exodus of 12 MLAs from the Congress party to the TMC ahead of elections. Its prospects look bleak, not just in Meghalaya, but also in Nagaland, where the BJP-NDPP alliance is going strong and by all accounts touted to return to power. In Tripura, which till 2018 used to be a left bastion, BJP has consolidated its position with the tribal outfit IPFT. CPIM, meanwhile, has joined hands with its erstwhile rivals, the Congress party, to revive its fortunes. With another regional player, Tipra Motha, coming in as a spanner in the works, Tripura could be an interesting contest. Let me go across to our panelists joining us here this evening, Mr. Ravi Shankar Ravi, editor of Dainik Purvodaya, also Smita Gupta, senior journalist. Very good evening. Thank you so much for joining me here. रवि शंकर जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह के कॉन्टेस्ट हम देख रहे हैं, त्रिपुरा से शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है ये जानने को मिला है कि इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है. IPFT जो है इनके loyalties are not tested yet is what I am getting to hear, because the Tipra Motha is also trying to lure them, though they are supposed to be BJP allies. And the seat sharing 55 and 5. 55 seats contested by BJP, 5 by IPFT. It looks like the BJP is going whole hog this time. क्या मानना है आपका त्रिपुरा की स्थिति के ऊपर, आपकी राय क्या है? देखिए, जो एग्जिट पोल है उसने तो पूरे उदारता के साथ वहां पर कह दिया है कि त्रिपुरा में भाजपा एक बार फिर से आ रही है और ट्रंप मेजोरिटी के साथ आ रही है. लेकिन सवाल यह भी है कि देखिए, जो वोटों का जो परसेंटेज प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कांग्रेस CPM अलायंस और कांग्रेस बीजेपी के बीच में. तो लेकिन बीजेपी ने जिस ढंग से वहां पर पूरी ताकत झोंक दी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर, माने हर तरह से वहां पर उन्होंने चीजों को रोकने की, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी वहां पर बहुत ज्यादा श्योर नहीं थी. अब उनके दावे उनके नेता कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बावजूद इसके त्रिपुरा मोथा का बहुत ही क्रूशियल उसकी भूमिका होगी वहां पर. फाइनली रिजल्ट आ जाए और बहुत ही नैरो मार्जिन के साथ परिणाम आएंगे. इसलिए अभी परिणाम आने के पहले, लेकिन एक चीज तो यह है कि बीजेपी ने अपनी पहले से ही रणनीति शुरू कर दी है कि गेम 1, गेम 2, ये इतनी सीटें आई तो ये होगा, अगर ये नहीं मिली तो उसके बाद ये होगा, क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है वहां पर अपने आप को रिटेन करने का. और दूसरा एक इंटरेस्टिंग जो एक्सपेरिमेंट कांग्रेस और सीपीएम ने किया है अलायंस का, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने जिस ढंग से खुद को लो डाउन किया है, वहां पर अचानक उनका प्रचार, उनका कैंपेन जिस ढंग से मेघालय में जितना ऑफेंसिव था, त्रिपुरा में वह दिखा नहीं. तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है कि क्या परिणाम सामने आते हैं. अगर कांग्रेस लेफ्ट परिणाम सामने नहीं आते हैं अच्छे, तो उसका असर फिर दूसरी जगहों पर भी पड़ेगा. जी, मेघालय और नागालैंड पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन लेट मी गो अक्रॉस टू स्मिता एज वेल. स्मिता, मेघालय, इफ यू लुक एट इट, again, you know, mass exodus from the Congress joining the TMC. There, the TMC is really trying to make inroads, trying to establish itself as a party in the Northeast. What, according to you, are its prospects? Congress depleted, Congress's loss becomes TMC's gain. But at the same time, we know Conrad Sangma has made it clear that if he falls short, he will take the help of BJP again.
Yes, absolutely. The Trinamool Congress, as we know, has been trying to establish itself in the Northeast, both in Tripura as well as in Meghalaya. In Meghalaya, which you mentioned, we already have Mukul Sangma, who was earlier with the Congress party, now the Trinamool Congress leader in Meghalaya. And if the exit polls are correct, they have done reasonably well. I mean, the NPP of Conrad Sangma, of course, was shown as the lead party in the exit polls. I'm repeating exit polls, they are not results. Right. But the Trinamool Congress was seen to have done very well. It was just behind it. The comment I would really like to make is about the Congress party, because the Congress party is just not able to keep its flock together. Yes. In Meghalaya, as we saw, almost en masse, the party walked over to Trinamool Congress. Yes. In Tripura, what has happened is that this new party, Tipra Motha, which is being headed by Pradyut Debbarman, the current Maharaja of Tripura, he was originally a congressman. He was, in fact, the state Congress leader for Tripura. And it was because he was not given a free hand, as we see in many other states. He decided to form his own political party. Now, again, if the exit polls are correct, he seems to have done reasonably well for a first-time party. And in comparison, according to those very exit polls, the Congress has not done well at all, though the CPM appears to have taken some seats according to that. Yes. I mean, of course, the results may show a completely different result. But if a party like the Trinamool Congress can make an effort in the Northeast, why is it that a party like the Congress, which is the country's oldest party with the biggest footprint, still not be able to hold on to its people? It's a lesson to the party that you have to enable and strengthen your party leaders in the states. It cannot the same happened with Himanta Biswa Sharma, who moved on to BJP, and today he is the chief strategist for the BJP in the Northeast. And like you mentioned, Pradyut Debbarman is another example who the Congress should have retained if it wanted to retain its foothold in the northeastern states, perhaps didn't take it seriously enough. रविशंकर जी आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, नागालैंड में देखिए 21 MLAs moved from NPF to NDPP. ये जो है एक पैटर्न सा हो गया है कि एन मास MLAs इधर से उधर हो जाते हैं और जो मैंडेट होता है लोगों का उसका एक तरह से डिसरिस्पेक्ट तो बहुत लाइट होगा बोलना, मतलब मैंडेट का तो कुछ मायने ही नहीं बचता। फिर जिस पार्टी को लोगों ने इलेक्ट किया वो पार्टी सरकार नहीं बना पाती है, हालांकि कुछ और ही हो जाता है। नागालैंड में भी वैसे ही हुआ लास्ट टाइम, इसीलिए हम जो वो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, जो वेकेंट हम दिखा रहे हैं, वो MLAs ने अपने सीट से रिजाइन कर दिया और वो सीट्स वेकेंट है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज रविशंकर जी कि लोगों के मैंडेट का कुछ तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग ही है। असम और अगर आप मिजोरम को छोड़ दीजिए तो नॉर्थ ईस्ट में इसी तरह की पॉलिटिक्स होती रही है। अरुणाचल में पूरी सरकार बनती है कांग्रेस की और रातों रात मुख्यमंत्री समेत पूरी पार्टी जो है वो भाजपा में चली जाती है और भाजपा की सरकार बन जाती है। नागालैंड में पहले नेफिरियो NPF के लीडर थे जी, लेकिन जब वहां पर उनको परेशानी महसूस होने लगी, विरोध होने लगा, तो वो पूरी पार्टी को लेकर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और बीजेपी के साथ अलायंस किया। देखिए नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर असम को छोड़ दें तो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है आमतौर से नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में सरकार में जो भी पार्टी हो वो केंद्र सरकार के साथ बेहतर संबंध रखना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, कल को अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं रहे तब आप देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों में भाजपा की सरकार है। रही बात मेघालय की, तो यहाँ मैंडेट जिस पार्टी के बस आता, अब मेघालय में देखिए ना, कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी पिछले चुनाव में जी, लेकिन कर्नाड संगमा ने
भाजपा के साथ मिलकर और असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनाई और वहां पर एनडीए की सरकार बन गई। वो मुकुल संगमा पूरी 12 एमएलए को लेकर वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए। और इस बार भी जो तृणमूल कांग्रेस का वो प्रदर्शन होगा वो ड्यू टू तृणमूल कांग्रेस नहीं होगा, वो मुकुल संगमा का अपना एक प्रभाव है और गारो क्षेत्र में उनको ज्यादा सफलता मिलने की संभावना है। खासी क्षेत्र जो है उसमें कुछ एक आध दो सीटें मिल सकती हैं। और लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बार मेघालय में होगी, जो ट्रेंड भी आ रहे हैं और जो अपुष्ट खबर भी आ रही है कि कल रात में कर्नाड संगमा और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच में अनऑफिशियली कहीं पर मुलाकात हुई है कुछ देर के लिए। तो आगे की रणनीति बननी शुरू हो गई है। जिस कर्नाड संगमा को मेघालय में आकर प्रधानमंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने भ्रष्ट, परिवारवाद का अगवा, ये सारी चीजें कही, भाजपा ने बहुत जोर लगाया, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि वहां भी फिर से जो पहले की जो व्यवस्था थी भाजपा और एनपीपी की सरकार, वही ज्यादा बनने की वहां पर संभावना है। और नागालैंड में तो खेल क्लियर है, वहां पर तो एनडीपीपी और भाजपा मिलकर सरकार बना रही है, उस पर कोई संदेह है ही नहीं। जी Smita, it is at one level a little, quite a dangerous trend, isn't it? If you speak to the leaders from the Northeast, they will tell you that yes, it is true, they would like to be in power with the party at the center because it's easier to get work done. Otherwise, Northeast gets neglected. So it is for their convenience and for the people's interest that the regional outfits prefer to ally with the party at the center. But on the other hand, it's a travesty of people's mandate, of the electorate, and of democracy at large. Absolutely. And, this is being, I mean, it's not that this is a new phenomenon. I would like to stress it has been seen in the past, even before the BJP came to power. But at least in those days, Assam and Tripura seemed to be free of this particular disease or whatever you would like to call it. But under the present government, with this whole talk of double engine government, which is really an anti-federal, anti-democratic kind of way of looking at things. Because what does it mean? It means that if a state government votes the same way as the central government, then the funds will roll in. Otherwise, the funds won't roll in. Otherwise, What is the meaning of double engine government? So I think this is a very, negative trend. And also the other part that Ravi Shankar Raviji mentioned about governments turning, one set of people getting elected and another set coming to power. Yes. Which is really a travesty of the mandate given by the people. Yes. Perhaps some kind of electoral reforms are required to ensure that this kind of change in the people's mandate is not permitted, is not, it becomes illegal. Right. For the BJP, of course, we know with general elections approaching, in a little over a year, these three elections are important, even though two of the states are very small. Yes. Because it kind of will set the tone for the rest of the assembly elections that follow this year. Yes. There are 6 other major elections coming up in Karnataka, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana, and I think Mizoram. Yes. So this is a beginning. And let us not forget that in the last general elections, of the 25 Lok Sabha seats in the Northeast, the BJP and allies managed to win 19, which is, a formidable number out of that 25. True. Right. So the BJP going whole hog, even if you look at the campaign, it wasn't seen before. The level of presence of national leaders in the northeastern states as we saw in the campaign this time around. I'll have to leave it at that. Ravi Shankar Raviji and Smita Gupta, thank you so much for joining us.